state visit to the United States. He's been taking his official trips to the United States, but this time around it's a state visit. Now, people already know what is an official visit, what is a state visit. So much has already happened, from visuals of the Indian American community expressing their solidarity, celebrations, they're holding, unity marches, big placards with photograph of Joe Biden and the Prime Minister of India, Narendra Modi, saying that these two leaders are the global phenomenon, the new duo that the entire world needs at this point in time. We're showcasing visuals of the Prime Minister planning for New York. He's embarking on this journey, and these were some of the first few visuals that came across today, Pankaj, early in the morning. People are absolutely excited. There are live blogs on internet of what the Prime Minister is doing right now. He just took a breath over here. What is he going to eat over his top? What is the plane, full of? All those things, those are the quirky tidbits that follow. But on paper, some crucial bilateral meetings with Joe Biden. These are tweets that the Prime Minister did put out for before leaving. He says, leaving for USA, where I will attend programs in New York City and Washington, D.C. These programs include Yoga Day celebrations at the United Nations headquarters, talks with the POTUS, Joe Biden, and address to the joint session of the Congress and more. And you know what? All the top papers, the front page, all anybody could talk about in any case is his visit. This is Prime Minister Modi's departure statement. That's running on your screens. The MEA, the Ministry of External Affairs, put out this departure statement, briefly after the plane took off. This special invitation is a reflection of the vigor and vitality of the partnership between our nations. This visit will be an opportunity to enrich the depth and diversity of our partnership. The initiative on critical and emerging technologies has widened collaboration to various sectors. And Pankaj, these various sectors are not just defense, it's also artificial intelligence, it's biotech sector, all of that is happening. And the Indian community over there, take a look at that, right in front of the White House with the flag. You can see the smiles. In Australia, I remember, Pankaj, you were telling us that you had friends in Australia, and during Prime Minister's recent trip to Australia is when you received those messages saying that the Prime Minister gives us a different sense of being. There's a different identity that Indians and the diaspora out there is actually proud of. What are you making of these pictures? Take a look at this. It's a proper fest ahead of Prime Minister's visit. Right. Absolutely, colorful pictures that are coming out of the United States, and it's going to be the same for the next 3 days as well. Absolutely, Kabir. These visuals are just the beginning. These are in the anticipation of the arrival, and we can just imagine what the situation would be when Prime Minister Modi lands there in Washington, D.C. in a few hours from now. And obviously all these people, they are right now in Washington, D.C., but I'm sure they have come across from the lengths and breadths of United States only to meet and greet Prime Minister Modi, to have that glimpse of the popular mass leader that India has also, and the world also has seen after a very long time. For the Indian diaspora, obviously, Kabir, there are many reasons, several reasons why they should be a happy lot, because as you mentioned, in case of Australia, the separate identity, the separate being that is being associated with the word India is pretty much palpable. And likewise here in United States, so which houses a huge number of, sizable number of Indian diaspora community in the state. They have so many reasons. I was initially speaking to some of my friends and relatives there, and I'm sure each one of us, every household has at least one connect to United States. What their opinion was, Kabir, is the fact that the kind of paperwork that was required earlier to stay on in the United States, the visa work, the PIOs, persons of Indian origin, to the green card possibilities, all those things have been eased down for quite a bit, and it has become more easier. It's not cumbersome anymore, and that's why the Indian community, apart from the fanfare that is there,
they're also backing this visit. The tricolor, Pankaj, all across the streets in the United States of America. It is a proper full-blown state visit. You wouldn't expect anything less either. Let's, quickly listen into some reactions that have also come in from various diplomats, from, former ambassadors to the United States and vice versa. Indian American singers, our celebrities out there, they've all given their reactions. Let's begin with what Taranjeet Singh Sandhu had to say, and Ricky Cage, the Grammy winner musician. Let's take a look at those reactions first. So this is indeed a historic and a path-breaking visit. And I use these terminologies by fully looking into them. You will see both on the substantive side and on the ceremonial side that it will be historic. As you are aware that this will be the third leader from independent India, that is in the last 75 years, who has been invited by the President to be the state guest. And that has many ingredients, including a formal ceremonial welcome at the White House. Then there will be, of course, the formal talks, and there will be a formal ceremonial dinner where you will see the top of the cream of United States attending. We have often seen, in fact, editorials are written on them subsequently. Then there is the ceremonial lunch hosted by the Vice President and Secretary of State. And of course, there is going to be the joint session of Congress, which Prime Minister will be addressing. There are three aspects of this which are very important. One, you will see the personal chemistry reflected in a number of interactions. In fact, this visit will show perhaps the maximum interaction between Prime Minister and President of the United States. Number two, you will see that the next level of the partnership will be visible. Thirdly, if I may add that the global good, and as Prime Minister Modi has often described that this is a partnership for global good, that will also be very clearly visible. It's amazing. The state visit is absolutely amazing, simply because one of the world's oldest democracies, that is America, is having this diplomatic relationship with India, which is the world's largest democracy. So it's a matter of pride for all of us, simply because both countries can learn a lot from each other. In fact, America can learn so much from India in terms of our spirituality, in terms of mental wellness, in terms of wellness in general, and we've got such an ancient culture that America can benefit so much from learning from us. Now, under Prime Minister Modi, now June 21st is internationally recognized as the United Nations Day for Yoga, which is fantastic, that yoga has got such a strong prominence all over the world simply because of Prime Minister Modi. And then now at this location over here, that is the United Nations headquarters in New York, we're going to be having, of course, every year, World Yoga Day is celebrated here. But this year is going to be extra special because Prime Minister Modi is going to lead everybody into yoga. So I'm very thrilled that I'm going to attend World Yoga Day the day after tomorrow for this particular event. Well, Pankaj, Ricky Cage is excited about World Yoga Day. Are you excited about World Yoga Day? What's your plans for World Yoga Day? Are you going to stream into the live telecast of Prime Minister Modi celebrating the Yoga Day Yes. from the lawns, the really swanky plush lawns of the United Nations headquarters? Indeed, we have plans, Kabir, and starting 7 in the morning, we'll be broadcasting special shows on how this soft power of India is at full display at one of the power centers of the world, United Nations headquarters. And Ricky Cage is right when he says that under Prime Minister Modi's leadership, this Yoga International Yoga Day has been commemorated. I remember distinctly 2014 when he came into power. 2015 we were in Istanbul at that time, and that was the first full-blown yoga function that we saw being beamed across the world from New Delhi, where Prime Minister Modi led not just the country but the world
to celebrate it. And in 1 year's time, Kabir, it was stupendous. It was unbelievable, the kind of reception, the kind of reciprocation yoga received from all the powerful countries, from all the countries big and small. We received visuals. The flowers that you see, I mean, you know, the seers, the pandits, the pujaris, I mean, this looks like an Indian-American wedding that's taking place in the United States. There is much fanfare about it, you know, the decoration is on point. It's some big fat Indian wedding, you know, like how people call it, that's taking place in the United States. That's the kind of vibe that you're getting from all of this. But the colors that you see, the people that are thronging the streets, those unity marches, you know, Pankaj, and we're running that line in our, you know, bands as well. What does it mean for the diaspora, the Indian diaspora out there? What's in it for them? A lot, Kabir. This for the Indian diaspora who live there, it is very important for them. And they tend to also to retain and to maintain their cultural diversity. Look at them. These ladies might be, you know, working with the top-notch companies of the world in the United States. The person who is there, but not failing. Look at the excitement of the kids. The whole family is smiles on everybody's faces. It seems like everybody wants to, you know, pitch in just a little bit to make sure that Modi ji's visit to the United States, well, mind you, state visit to the United States is, you know, reaps all the benefits and is fruitful, absolutely 100%. You know, the Prime Minister also gave an exclusive interview to the Wall Street Journal, and a couple of interesting things that he said at the Wall Street Journal as well. I'm going to take some, you know, quotations from there. He starts by saying that there is an unprecedented trust between the leaders of the United States and India. He says that India deserves a much higher, deeper and wider profile and a role. He says that we do not see India as supplanting any country. We see this process as India gaining its rightful position in the world. For normal bilateral ties with China, and this is when he's talking about China, peace and tranquility in the border areas is essential, but at the same time, you know, India is fully prepared and committed to protect its own sovereignty and dignity. And this is something, you know, that we've seen time and again, how we've hit back at the United States, how we've hit back at American-based, you know, research surveys and reports, how we hit back at the notion of, you know, amidst the Ukraine and Russia war, India took its own stand by, you know, consuming oil from Russia and taking a stern point on the fact that peace and tranquility should be the topmost priority. So India's foreign policy is something that has gotten popular, and the poster boy is nobody other than Dr. S. Jaishankar and Prime Minister Narendra Modi themselves. And foreign policy is something of huge interest for everybody now. Indeed it is, and why not? Because the way India has progressed and has placed itself as far as the international dynamics are concerned, be it emanating from the fact of Ukraine and Russia war, to you know, maintaining a very tough stand as far as its take on terror is concerned. All those things put together has brought these like-minded countries together, Kabir, and for them, obviously, backing India, supporting India at the highest level is something that not just India now, but the rest of the countries too find it congenial. Remember, the defense procurements that India has been doing either with the United States or for that matter France, that aspect too has brought all these countries together. Now, why it is important for India? Obviously, it is faced with two hostile neighbors, if I may say so, Pakistan and more so China. So these threats are also once again a common threat perception that the world perceives, you know, in this South Asian region. So for India to have a strong stand and to make it known that, hey, look, we have also arrived. We are not someone who can be pushed aside, and the world should take note of India's stand. So that's what Prime Minister Modi stands all about. All right. So from colorful visuals of people dancing, we also showcased you a visual of people, you know, preparing that particular dance performance. Let's quickly play out that visual once again and really understand, you know, the music.
Well, so rehearsals are currently on. It is going to be a magnificent show, I'm sure, Pankaj. We also have, some reactions of people, the Indian American community at the Times Square. Some reactions coming from New York, even as the Prime Minister is currently en route New York. Let's take a look at what the people on the ground are expecting and hoping. To make this beautiful garland with the tricolor theme, to welcome our India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And we also want to make this garland so big and so unique that we had to collect so many different kind of the flowers, and we tried a lot of different, and this is America, so we tried different places to get the flowers, and finally we found in one of the organic farm, and we got these flowers from the organic farm. वेद मंत्रों के द्वारा वेद मंदिर में ये फूलों का हार मोदी जी को अर्पण करने के लिए, भेंट करने के लिए हम उन्होंने वेद मंत्रोच्चारण करते हुए बनाया. We placed an effort, and it's a very humbling realization that the community is turning out in numbers, most of them US citizens who have been here for a couple of decades, showing their affection and love towards our motherland, towards the leader of our motherland, who's coming and presenting this unique gesture of creating a handmade garland that will take hours to compile and put together through different volunteers. As you can see, the volunteers are changing, kids are here, adults, all age groups are here. This is a very auspicious moment in a US soil about that our beloved Prime Minister, in our opinion, is a hero, is a rock star, is a famous in the world, is a #1 Prime Minister in the world. Is also our view is a Yug Purush of this century of the entire world. बहुत उत्सुकता है कि इससे भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो तो होंगे ही, और इस साथ ही में खाने का भी एक बहुत वो है, मैं तो जैसे मिलेट जो से प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको हमने भी यहाँ पे भी काफी अच्छी तरह प्रमोशन किया है, इंडियन काउंसिलेट और जयपुर फूड सब के साथ कन्वर्स करके. तो हमने स्पेशल मिलेट मेन्यू भी चलाया है, सारी डिशेज मिलेट से बनती है उसमें. Well, so you heard those reactions as well. Interestingly, he spoke about millets. Now, there's a New York restaurant. It's the first restaurant in New York, Pankaj, that has introduced millets. Take a look at that. That's the cuisine. And Prime Minister Modi ji's thali, that special thali that's doing the rounds in New Jersey, this is what's happening in New York. It's the first restaurant that's introduced millets. And it is the year of millets in India, isn't it, Pankaj? So that's the kind of ripple effect the Prime Minister, and that's the kind of sway he has on, cultural changes, some 6,000 plus miles away from where he's actually at the center of, the ruling party. Yes, and definitely this, this might appear to be one committed restaurant actually going an extra mile and preparing a meal based on millet, but does look gourmet and tasty. Well, it does. And obviously, International Year of Millet is something that Prime Minister has been one of the pioneer voices to promote it. And these gestures, Kabir, if we look at it in totality, these are not just a part of welcoming a very famous Prime Minister or personality. It also gives our Indian diaspora, our Indian brethren and sisters who are there miles and miles away from their homeland, a reason to connect. It's like Diwali, it's like celebration for them, wherein they can put on their best attire, wait for their beloved, their hero, as the person was mentioning, and then also showcase maybe symbolically that how connected they are with their country, even staying miles and miles away. So be it the cultural aspect, be it the language, United States houses the Indian diaspora, which not only works for the companies there, but also in a way tries and preserves its own culture. Remember, if you wonder, Kabir, the classical dance, classical music, Hindi language classes, Sanskrit classes are being held by these Indian diaspora, where
thousands and thousands of families and enlist their children for. Sanskrit is something that has also gotten a lot of popularity. Let's quickly play out a reaction. This reaction coming from Elliot MacArthur. Now, Pankaj, Elliot MacArthur, there's something interesting about this man. Dr. Elliot MacArthur is a Sanskrit scholar. So it's going to be a little, appalling for people to listen to him speak in real fluent Hindi. He's a Sanskrit scholar. Let's take a look at what Dr. Elliot MacArthur, a Sanskrit scholar, has to say on Prime Minister. And he is a US citizen. He's an American. Yes, sir. दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि ये देश मेरा घर है और भारतीय मूल के लाखों लोगों का भी। पिछले कई वर्षों में भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका राष्ट्र का योगदान दिया। वो लोग काफी तरक्की करके इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण के संभावनाएं बढ़ेंगी और भाषा के माध्यम से आपस में सांस्कृतिक संबंध भी नया मोड़ लेंगे। दोनों देशों में आपसी सहयोग हमें एक दूसरे को समझने का बेहतर अवसर, अधिक स्वतंत्रता और नई प्रेरणाएं देगा, जो पूरे मानव समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मोदी का दीवाना, मोदी मोदी हमारा कहता है, सारा जमाना। There you have it, Pankaj. That's a proper Narendra Modi style rave party that's happening from American citizens, of course, albeit a Sanskrit scholar, speaking in fluent Hindi. I mean, better than me, perhaps, at some points, महत्वपूर्ण था और उनके इस विजिट की, उनकी इस मुलाकात की महत्वपूर्णता के बारे में बात कर रहे हैं. A Sanskrit scholar, Dr. Elliot MacArthur. Everybody is calling him a rock star, and he is a rock star, isn't he? He's a proper PR magnate. He's a rock star. You make Narendra Modi the face of something that particular initiative, is a super hit. Well, we have to give it to Prime Minister Modi, Kabir, hands down. There are no two ways about it. And remember, Kabir, if I ask you, in that part of the world, for that matter, cricket is not so famous, but Bollywood films are, Bollywood superstars are. Prime Minister Modi surpasses the charm, the enigma that he carries with him than cricket stars or superstars. But I would quickly mention to you here, 2016 July, when Prime Minister Modi had visited South Africa to attend BRICS Summit, several of my colleagues who were traveling from Pretoria to Johannesburg for work, they would say, Pankaj, there is some Indian Bollywood celebrity coming to Pretoria. That's why the roads have been decked up. That's why preparations are on. They are cleaning the pathways and everything. So who is it that is coming? And we had to just check the schedule, and we found out that it's the BRICS Summit, meetings would happen in Pretoria, and that's why it was Prime Minister Modi whose arrival was highly anticipated there. And African continent too houses a lot of Indian diaspora, just like the Americas. And this is the basically enigma. People at that time, 2016, would know Bollywood superstars, but now the identity of India is primarily through its sports stars, obviously Bollywood stars, and also Prime Minister Narendra Modi, one of the few Prime Ministers to have had such a mass connect and a recall value. So preparations are underway in the United Nations headquarters as Prime Minister Modi is expected to land somewhere about 1:30 a.m. Indian Standard Time. That's when he is expected to land in the United States of America. Preparations are on. Take a look at that. This is where on International Yoga Day, the Prime Minister of India is going to lead the celebrations from the United Nations headquarters. And whilst we're at it, let's quickly listen in to Saba Kurosi,
who's the president of the United Nations General Assembly. Even as we're looking at all these visuals, Mahatma Gandhi statue, of course, over there, the United Nations headquarters, the one that you see in all the textbooks and all the pictures, pamphlets, that's where International Yoga Day is going to be celebrated. And who's going to be at the center of the celebration? It's going to be the Indian Prime Minister Narendra Modi. Saba Qureshi, President of the United Nations General Assembly. Let's take a look at what they had to say. I've met Prime Minister Modi a couple of months ago in New Delhi, and I had a deep impression after our meeting. A person with vision, a person with strategic thinking, person who has a very deep tradition, bringing with himself a very deep tradition of a nation, and a clear vision where the modern India should look like. And I'm very happy to greet him. He is very much welcome in the United Nations, and he's one of the highly respected leaders of the world coming here in a short period of time. Well, so that was the President of the United Nations General Assembly. And, you know, we are going to showcase the viewers, Pankaj, because we've sent a team down there. We will show them what's really happening in New York, what's the feel and vibe like in Times Square, what are people saying in Times Square. Tonight is going to be magnanimous. The lights are going to come up. The tricolor, you can expect the tricolors being lit up in various corners of New York. The drones and the jet engines, these are two technologies that, you know, are finally going to be transferred. They're the key highlights of this particular official state visit. Let's quickly just, you know, talk about that as well. The drones, and we're going to be getting the Predator drones now in size as well. I was taking a look at the morning newspaper. It says it's a drone deal, but plenty needs doing before Desi UAVs take wing. And of course, Make in India is a push. We're working on that front. The biggest thing in this drone deal is the fact that there is going to be an overlooking, facility somewhere in the Pacific region, sort of like a maintenance overall facility for our drones that we're going to buy. 31 of those for $3 billion. I mean, that's a huge amount. If the drones are going to be so expensive, they will come here. We better have a facility where we can, you know, take these drones for maintenance or any kind of repair work. So that is also going to be there. These drones will give us some sort of a view into how warfare has taken itself to the next generation and the advanced level. Well, no two countries other than United States and India have faced this scourge of terrorism, in the world, Kabir, and for them to collaborate in defense technology is only as natural as it can get. And for the world's biggest democracy and the world's oldest democracy, obviously, to demonstrate the highest values of peace and tranquility, or at least the effort to do so, is pretty much required. And obviously, the new age warfare that you spoke about needs these machines and these technologies. And hence the Quads, hence the BRICS, hence the G20. I mean, of course, these are non-military alliances, but you've got these, member countries getting together. And it seems like the elephant in the room is always the dragon. An animal analogy over there. Let's quickly listen into what Susan Besivic's, Prem Bhandari, Richard M. Rosso, Aparna Pandey, somebody who's a fellow at the Hudson Institute, and Falgunisha, another Grammy winner and an Indian American singer. These particular reactions, let's quickly listen to them as well. On behalf of the people of Connecticut, I want to extend a very warm welcome to Prime Minister Modi on his state visit to the United States. India and the United States have a shared appreciation for democracy. It's a special occasion as the leader of the world's largest democracy visits the world's oldest democracy. Our shared values of and diversity nurture the bond between our peoples. Connecticut is home to a vibrant and growing Indian community. The largest percentage of immigrants in Connecticut are Indian, and we are so proud they have chosen to make Connecticut their home. The Indian diaspora has made many meaningful contributions to our state. I hope that your visit is successful, and I am confident that it will pave the way for an even stronger and closer partnership between India and the United States and between India and the state of Connecticut. दुनिया के बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिन्हें ये सुअवसर प्रदान हुआ होगा कि दोनों सदनों को संबोधित करेंगे
उनमें से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ये दूसरा मौका है, तो ये बड़ा गर्व का विषय है। आप देखें, ये 8वीं ट्रिप है माननीय प्रधानमंत्री जी की। 8 ट्रिपों के अंदर कितना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट किया है और उसके परिणाम देखें आप। आज अमेरिका भारत के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ये उसी का परिणाम है। Well, there's a lot of pomp and circumstance that goes into a state visit, which hasn't been accorded to an Indian leader in quite some time. But the pomp and circumstance is fun, but the substance, it sounds like they got a lot of really big deals teed up. Even behind the scenes, both governments are talking about the significance in terms of concrete announcements they plan to make, primarily in defense as well as in strategic commercial areas. So it's going to be a big deal. It's going to be highly visible. A lot of things that I think helps tie the relationship together, and also some concrete deals. All good. Well, you know, we both have had a difficult time finding common ground between governments on general commercial policy issues, and that kind of remains true to today. It's been true for multiple administrations. But on these areas of strategic commercial interest, when we talk about quantum computing, 5G, 6G, artificial intelligence, semiconductor production, things like this, we both share the concern if China is able to dominate manufacturing and flow of this goods in the future. खुशी हो रही है पूरी कम्युनिटी को, हर एक बंदा अपने देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, इतना आदर सत्कार उनको बुलाया है बाइडेन साहब ने, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि दो डेमोक्रेसीज मिलेगी। और जब दो देश जो इतने महान हैं वो मिलेंगे तो अच्छा ही होने वाला है। तो हम पूरे अमेरिका में जैसे ये इतनी खुशी छाई हुई है हर एक भारतीय के दिलों में कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या बात है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गुरूर वाली बात है। Well, so June 20, Prime Minister arrives in New York, meets with thought leaders in civil society. Elon Musk is also going to one of those people that the Prime Minister is going to meet. What's going to happen? Are we expecting a Tesla manufacturing plant in India or not? You batted a little bit of an eyelid. June 21, he leads the Yoga Day. June 22, White House reception meet, address to US Congress, state dinner. And June 23, meetings with CEOs, lunch hosted by VP Kamala Harris, Secretary of State Antony Blinken. So a lot that's going to happen. Nishant, our colleague, is in the United States of America. He's filed in a ground report from Times Square. We're going to leave you with that ground report. Take a look at what's happening. What are the people really feeling? Our eyes and ears are going to be here in India at the MEA's control room and what's happening in the United States as well. Log on to News9 Live anytime you want to get the latest on Prime Minister's state visit to the United States of America. Pankaj Mishra, many thanks for joining with us here. This is Kabir Naqvi signing off, leaving you with that special report from Times Square. हम कहां पर खड़े हैं आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क का ये टाइम स्क्वायर है। यहाँ की रौनक में 4 चांद और लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कौन लोग? भारत के लोग। और ये जो भारत के लोग हैं क्यों यहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि ये टाइम स्क्वायर पर ओपन टाउन हॉल है और मैं आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सबसे पहले क्विकली मैं लोगों से बात करता हूं। सर, आप कहां से हैं? आप तो मैं जानता हूं आप तो न्यूयॉर्क से ही हैं और भारत के हैं। मैं न्यू जर्सी में रहता हूं। लास्ट 25 इयर्स आई एम हियर। अच्छा, ठीक है। आप कहां से हैं? मैं अमिताभ श्रीवास्तव नई दिल्ली से आया हूं और आए हैं आप भारत महोत्सव की तैयारी करने के लिए और मोदी जी का स्वागत करने के लिए। ठीक है। आप सर? मेरा नाम ऋषि है, मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ 25 सालों से। यहाँ मोदी जी के आने के उपलक्ष्य में हम सब जमा हुए हैं। ओके, आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम शिव कुमार अग्रवाल है, मैं न्यू जर्सी से हूँ। यहाँ पे 35 इयर्स हो गए रहते हैं। 35 साल से हैं यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए। आप आपका नाम सर? मेरा नाम मुकेश मोदी है, मैं फिल्म मेकर। क्या नाम है आपका? मुकेश मोदी। ओके ओके। और फिल्म मेकर हूँ मैं और 35 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, 94 से। और यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए हम लगे पड़े हैं। और हम यहाँ न्यूयॉर्क में नहीं है, पूरे अमेरिका में मोदी जी के स्वागत का महोत्सव चल रहा है। ये भारत महोत्सव के साथ में ये मोदी जी का महोत्सव नहीं, महा महोत्सव चल रहा है। ओके, ये ओपन टाउन हॉल है। सर, आप कहाँ से? मैं मिलन पारीक अहमदाबाद से। केम छो? जय श्री कृष्ण नरेंद्रभाई। મોદીના સ્વાગત માટે હું અમેરિકા આવ્યો છું અને અમેરિકામાં જ્યાં સુધી મોદીજી છે હું ત્યાં સુધી અહીંયા રહીશ। 2024 ને 2029માં भी नरेंद्र मोदी જોઈએ। जय हो मोदी जी की। अच्छा, आप इसको हिंदी में भी बोलेगा। आप कहाँ से? मैं हेमंत पारिक हूँ, मैं अहमदाबाद से आया हूँ और सीए हूँ। सब लोग मोदी जी के लिए आए, मैं खुद भी मोदी जी के लिए आया हूँ। अब जो अगले सज्जन है वो यहाँ से जा रहे थे, उनको मैंने रोक लिया। सर, आप तो शायद इंडिया से ही है ना? मैं इंडिया से हूँ, मैं नई दिल्ली से हूँ और चिकित्सा और योगा के क्षेत्र में काम करता हूँ।
और यहाँ पर बड़ा उत्साहित हूँ ये देख के कि मोदी जी यहाँ पर विश्व योगा दिवस के अवसर पर आ रहे हैं और लोगों को योगा कराएंगे, और उसमें भी मेरा पार्टिसिपेट करने का पूरा प्रोग्राम है। चलिए अब जरा थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं यहाँ पर आप लोगों से। प्रमोद जी, सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, आप जो बता रहे हैं मुझे मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, उसका बड़ा उत्साह है, चीजें देखने को मिल रही हैं। आइए सर, प्लीज जॉइन अस। केनी देसाई। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? केनी देसाई। और आप कब से FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, वी आर इन आजादी का अमृत महोत्सव, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन। सर आप कब से यहाँ पर? 37 years आई एम हियर। 37 साल से आप यहाँ पर। तो आपसे ही शुरू करता हूँ, ये बताइए 37 साल में आपने इतना जोश भारतीयों में यहाँ पर कभी देखा? This is the highest, thrill. We are in a thrill today that our Prime Minister is here, and we are so blessed here that our Prime Minister, our beloved Prime Minister, that will be a Yug Purush of the entire world. He is the world leader. प्रमोद जी, एक बात बताइए, यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी हलचल हो रही है पाकिस्तान और चीन में। अच्छे काम में हमेशा फूफे लोग नाराज हो जाते हैं, तो ठीक है, उनका स्वभाव है, लेकिन भारत तो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पे चलता है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र से हम उनके लिए भी भला ही चाहते हैं। उनके लिए भला चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अमिताभ जी, आप मूलतः बनारस के? जी, मैं बनारस। अब मुझे ये जो मैं देख रहा हूँ, जो लोगों में जोश है, जो उत्साह है, क्या आपको लगता है कि ऐसा पहले कभी आपने देखा है यहाँ पर, जो जब अभी तक की जो हिस्ट्री में रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। जो हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है, इससे भी बड़ा होगा। ये भारत का विश्व गुरु बनने का एक प्रोसेस चालू हो गया है। भारत का विश्व गुरु बनने का। इस विश्व गुरु बनने के दौरान अमेरिका से जो हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है। एक तो जियोपॉलिटिक्स का डिस्कशन है, ऑब्वियसली मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, बट अगर आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, हम लोग यूएस में रहते हैं, जो एक समाज का हमारे प्रति एक व्यू पॉइंट है, वो डेफिनेटली चेंज हुआ है लास्ट 8-9 सालों में। क्या चेंज हुआ है? पहले हम लोग वी वर ट्रीटेड एज हार्ड वर्किंग पीपल, विच वी आर, बट अभी हम लोग, यू कैन सी इन द वर्ल्ड, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे लुक अप टू यू फॉर लीडरशिप एज वेल। दैट्स व्हाट चेंज। मुझे एक चीज जो सुनने को मिली, ज्यादातर रिस्पेक्ट तो भारतीयों को हमेशा से मिलती थी, लेकिन रिकॉग्निशन अब मिल रही है। या देखिए, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, माइक्रोन, सभी के CEO कौन हैं? अपने इंडियन ओरिजिन के जो हैं CEOज हैं। रिकॉग्निशन इनको इतना बड़ा मिला है, और उसके बाद फार्मा कंपनी में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, आपको बड़े बड़े पोजीशंस पे जो है CEOज, CFOज सब इंडियन मिलेंगे आपको। इसके लिए वी आर वेरी वेरी प्राउड। अच्छा, ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो फिल्म मेकर हैं, अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रोजेक्शन भारत का हो रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भारत अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है? 100% पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 94 से यहाँ पर हूँ, और जो रिकॉग्निशन जो भारतीय को मिली 2014 के बाद, मतलब हम तो चलो भारतीय हैं, बट अगर हम कोई टैक्सी भी पकड़ते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो यही बोलते हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री है बहुत मार्वलेस है, एकदम डायनामाइट पर है। तो ये मोदी जी की है। मोदी जी बांग्लादेश से सज्जन थे जो टैक्सी चलाते थे, मैंने उनसे मोदी जी के बारे में बात की, वो मोदी जी की तारीफ करने लग गए, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। यस, क्योंकि जो बोलते ना कि हिज वर्ड स्पीक्स मोर देन एक्शन, बोलते ना उनके एक्शन बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र प्रेम जो उन्होंने जो जगह है वो कभी नहीं जगा। जो इतने काम किए तो हम गिना सकते हैं कि टॉयलेट किए हैं, अपने चूल्हे लगा दिए या गैस लगा दी, उसके अलावा तो कितने काम किए, बट वो छोड़ दो। जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो अभी पूरे आज तक ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ, जो लोग यहाँ पर सड़कों पे आके उनका जो स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, वो कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, और मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप अहमदाबाद से, अभी हमारे एक नेता को स्टेट हेड बनाया जा रहा है, मतलब एक नेता को स्टेट वेलकम दिया जा रहा है, एक ऐसा नेता जो कांग्रेस में दूसरी बार बोलने जा रहे हैं। गुजराती अस्मिता की बात करें तो उसका कितना ज्यादा जोश बढ़ जाता है? गुजरात का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह से कोई दूसरा देश उनको इस तरह से आमंत्रित कर रहा है, और उस आमंत्रण में हम लोग सब शरीक हो रहे हैं। तो ये गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, अगर हम लोग ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है,
क्या भारत अपने साथ अपने पड़ोसियों को ले जाने के लिए अभी सक्षम हो गया है या उनकी नानुकुर चलती रहेगी अभी भी, और खासकर ये देख के ईर्ष्या ज्यादा होगी? देखिए, भारत हमेशा से विश्वास रखता है वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पे, और हमारी जो सरकार है वो उसी मंत्र पे काम कर रही है। जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छा संबंध बनाने की। पड़ोसी क्यों कहें, अगर आप बात करें अभी रिसेंट हम कोविड पेंडेमिक की बात करें तो दुनिया के वो गरीब देश जिनके पास वैक्सीन कोई नहीं पहुंचा पाया, किसने पहुंचाई है? भारत ने पहुंचाई है। तो भारत ना केवल अपने पड़ोसियों को बट अन्य लोगों को भी साथ लेके चलने की बात करता है। जहां तक आपने बात की कि जलन की, ठीक है, जलन एक स्वाभाविक गुण है, कुछ लोग शायद जलेंगे, लेकिन समय के साथ जब हमारा काम देखेंगे तो जो जलन है वो शायद प्यार में बदलेगी। और हम इसी आशा में काम कर रहे हैं कि जो लोगों की जलन है या नफरत है उसको किसी तरीके से प्यार में बदलें। और हमारी जो आप देखो, आज भारत में, मैं सन 2002 में पढ़ने आया था अमेरिका में, और आज 2023 है, और तब से अब में मैं इतना ज़मीन आसमान का अंतर देख रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। टाइम्स स्क्वायर में 2002 में भी आया, उसके बाद कई बार आया, और आज हूँ। अभी मैं कहीं जा रहा था तो मेरा, जब मैंने बोला इंडिया से, तो टैक्सी वाला मुझे पूछता, मोदी यू आर फ्रॉम दैट कंट्री, सो यू नो, जो एक रिकॉग्निशन हमें मिली है, ब्रांड मोदी। मैं आपसे बात करते करते इन बैनर्स पे देख रहा था, मेरे कैमरामैन कपिल बेदी को मैं बोलूंगा, कपिल जरा ऊपर नजर रखिएगा एक आंख से, क्योंकि वहां पर कभी भी मोदी जी का वेलकम फ्लैश हो सकता है। यहाँ पर वापस आइए कपिल, जरा यहाँ पर मेरे साथ एक और सज्जन है। अरे आपको मैं मिस कर गया, आप तो गुजरात से ही हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी मैं कई बार जर्सी सिटी में गया, मैंने लोगों से बात की, सब लोगों ने ये कहा कि मोदी जी यहाँ पर जो कर रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन 2024 में भी दिखेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दिखेगा, 2029 में भी दिखेगा। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये 100 इंडिया एट 100 का ब्लू प्रिंट छोड़ के जा रहे हैं मोदी जी। इंडिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, और इंडिया एट 100 वुड बी सुपर पावर। ऐसा बोलूँगा तो गलत नहीं कह रहा मैं। सर आपका शुभ नाम, आप कहाँ से हैं सर? हम शिव कपूर, हम शिकागो से विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारी वाइफ रश्मि। नमस्कार। तो हम लोग बस यहाँ विजिट कर रहे थे, तो आपको देखा है यहाँ पे। कैसा फील आता है जब आपको लगता है कि आपके प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जब हम विजिट करते हैं, इंडिया वापस जाते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही हो गया। और हम तो एक इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट, तो उनके प्रोग्राम जो साइंटिस्ट के हैं वो बहुत इंकरेजिंग हैं। मैम, इंडिया को लेकर क्या कुछ परसेप्शन अमेरिका में अब चेंज हुआ है? हाँ, सब लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब लोग केवल बंदरों की बात नहीं करते हैं, अब वो इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। नप, या वही बात है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हम लोगों को बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि हमारे इंडिया के लिए लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर इसका एक और चीज आपसे जानना चाहूँ, प्रमोद जी आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। अच्छा। वाशिंगटन आया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी वो न्यूयॉर्क आज ही घूमने आया था। वहाँ दीदी बोलती है खेला हो बे, यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ उत्सव हो बे। हाँ, उत्सव होगा। उत्सव तो है ही है ना? हाँ। मुझे प्रमोद जी एक बात बताइए, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ, इस चीज के बड़े पॉलिटिकल डायमेंशंस निकाले जाएंगे, बड़ी सारी बातें होंगी, इन सब चीजों को लेकर यहाँ के जो इंडियन अमेरिकन हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वो कैसे देखता है? वेल, देखिए निशान जी, भारत में ठीक है ये पॉलिटिक्स है, लेकिन हम भारतीय अपने भारत के लिए ही जीते हैं। हमें लगता है अपने मातृभूमि के लिए हम कुछ, कैसे हम उस महायज्ञ में अपनी थोड़ी आहुति डाल सके, क्योंकि उस मातृभूमि ने इतना हमें दिया है, तो हम उन चीज़ों से, पार्टी के लेवल से हम बहुत ऊपर सोचते हैं। आज भारत ग्लोबल इमर्जिंग लीडर बन चुका है। 2014 में मुझे याद है जब नरेंद्र भाई, जब मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जब वो, मैं कभी देश का मान झुकने नहीं दूंगा, और उसकी बात से देश को उस अग्रणी पंक्ति में खड़ा करूंगा, आज सब चीज़ को साकार होते देख रहा हूं। और सारे भारतीय यहाँ पे इतने गदगद हैं, और उनको हम तो कहते हैं भाई हमारी भी उम्र लग जाए कि देश हमारा जगत गुरु बने, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी के इस महासंगम को लीड करे। आप जो बता रहे हैं, मैं अभी प्रमोद जी से बात करते हुए अपने ट्विटर हैंडल को देख रहा था, इंडिया एंड यूएस से तमाम, मतलब सेनेटर्स, तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री का वेलकम कर रहे हैं। अब अमेरिका को जाना जाता है कि उसको पटाना आता है।
अमेरिका को धंधा करना आता है, वहाँ पे गुजरात के लोग हैं मेरे साथ। ये खाली धंधा करने की टेक्निक है या वाकई में कुछ है? अभी क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि पूरा अमेरिका ने पूरा देखो पूरा 300-400 ईयर ऐसा ही किया है, लेकिन अभी कोई चॉइस नहीं है, अमेरिका का कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो इंडिया है वही पार्टनर खड़ा रहेगा, क्योंकि जो इंडिया है वो अब जानता है इंडिया में सब लोग राज कर रहे हैं, लेकिन अब जानते हैं इंडिया है, अब ऐसा हम होने देंगे नहीं कि हम जब पटा लेंगे और हम पट जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी है, वो ऐसा पटने वाला नहीं है, अभी तो विश्व गुरु बनने वाला है। सो ऐसे अमेरिका की ज़रूरत हमारे भी है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि दूसरा कोई चॉइस नहीं है उसके पास, चाइना भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास ब्रेन है। अभी देखो 75% पॉपुलेशन इज ए यंगस्टर है, हमारे पास जो है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका को हमारी ज़रूरत बहुत है, टेक्नोलॉजी में है, अभी देखो ये सब डिफेंस में है, सब कुछ में है। सो इसलिए आप जो सोच रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है, ये सेंचुरी हमारी है और हम सुपर पावर बन के ही रहेंगे। आप जो बता रहे हैं, एक और चीज़ मुझे बताइए अमिताभ जी, अब योग, मैं योग की बात कर रहा हूँ, सोचिए कि योग को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा और हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं और उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं। क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी? नहीं, कभी किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट लोग जो है योग को भूलते जा रहे थे और बाहर लोग अपनाते जा रहे थे। ये हमारा हेरिटेज है, हमारी परंपरा है, हमारी विद्या है, उसको लोग लेके जा रहे थे। मोदी जी ने उसको वापस लेके एक नया आयाम दिया और जिसको आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। और आज हम अमेरिकन इंडियन या ब्रिटिश इंडियन की बात नहीं करते हैं, नाउ वी टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इंडियंस। आज हम ग्लोबल इंडियंस हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर की बात करूं, कॉर्पोरेट कल्चर में इंडियंस को लेकर पहले और अब में परसेप्शन कोई चेंज हुआ है क्या? Absolutely it has. जो मैंने आपको पहले बताया, पहले we thought of as hard working techie guys in most cases. नहीं, मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या उनको लगता है कि these are not just intelligent people, but ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें बिजनेस भी आएगा। Of course, that's what when I say leadership, उसका ये मतलब है बिजनेस भी आएगा और जो बिजनेस है उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं सक्सेसफुली। सर, आप 35 साल से हैं, जितना भी मैंने अमेरिका के बारे में पढ़ा है, जितना भी अमेरिका के बारे में जाना है, मेरे मन में एक हमेशा खौफ रहता है कि ये लोग टिश्यू पेपर की तरह लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो यूज होना चाहेगा उसको यहाँ पे बिकते भी ज्यादा टिश्यू पेपर ही है। नहीं, बिकने से कोई मतलब नहीं है। आप कैसे जो है आपको ट्रीट कराना चाहते हैं ये सब इंडियन जानते हैं और उसी तरह से वो ट्रीट होते हैं। पहले की तरह, अब पहले जो 10-15 साल पहले बात थी वो अब बात नहीं रही है। सभी कहीं भी जाइए, आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाइए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, सब जगह जो है इंडियंस जो हैं दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। कुछ देश कटोरा लेके खड़े रहते हैं, उनके लिए अप्लाई होता है आपने जो बोला। ओके, समझ गया, आपने बोल दिया है। इंडियन पासपोर्ट क्या? आज इंडियन पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। आज हम हर कंट्री में जाके भारत महोत्सव करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं और हर जगह देखते हैं इंडियन पासपोर्ट इज स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ये तो मैं मानता हूँ, मेरा पासपोर्ट वाकई में स्ट्रांग है। सर, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, मैं जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कटोरा वाली बात की है। अभी हम जो भी करते हैं वहां पर पाकिस्तान बोलता है कि ये सिर्फ धंधे के लिए हो रहा है, ये सब इसके लिए हो रहा है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। वो पाकिस्तान बोल रहा है, वो चीन के साथ खड़ा है। क्या आपको लगता है कि इस जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका और रशिया दोनों हमारे साथ मिलकर खड़े हो पाएंगे? ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसी बात करते हैं। जैसे कि इंडिया जो है बहुत पावरफुल है, रशिया को भी इंडिया चाहिए और अमेरिका को भी इंडिया चाहिए। हमने बैलेंस कर लिया दोनों के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में हमने बैलेंस कर रखा है बहुत अच्छी तरह। और ये ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पर, वो क्या करते हैं, भारत की बुराई कर रहे हैं और वो चाइना के साथ में खड़े हैं। जो चाइना जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज हो चुका है, कोई भी उसके साथ में काम नहीं करना चाहता है। आज सारे के सारा बिजनेस चाइना से इंडिया आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज हम लोग एक तो लॉयल हैं हमारे कंट्री के प्रति, और उसके अलावा मोदी जी ने जो हमारे में राष्ट्र भावना की जो आग लगाई है, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये सब मैं आपको बोलूँगा कि उसकी वजह से हम। एक और चीज़ है, भारत और अमेरिका के बीच पे जो डिफेंस टाइप हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा टाइप है जो बहुत कुछ बदलेगा?
मुझे लगता है ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आज भारत को अमेरिका की ज़रूरत नहीं, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए ये आगे चल के मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बदलाव इसमें आप देखेंगे। डिफेंस टाइप अजीत डोवल जी को अजीत डोवल जी जो हमारे जो NIA के जो इंचार्ज है, उनको यहाँ पर अलग लेवल के ऊपर देखा जा रहा है कि ही इज़ द वन ऑफ द, आज पहले जैसे कि मुसाद था, आज की तारीख में अजीत डोवल को वो दर्जा दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए सर, डिफेंस टाइप, अगर डिफेंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, भारत और अमेरिका में खासकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, जो कि अमेरिका ने कभी नहीं किया। उस लिहाज से अगर मैं चीजों को देखूं तो आपको लगता है कि हम उसको बैलेंस आउट कर देंगे विद रशिया? देखिए, जहाँ तक एक चीज़ है, सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगा, आपने जो बात की है टेक्नोलॉजी की, तो भारत और अमेरिका का जो इस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या जो भी चीज़ है डिफेंस के लिए, वहाँ दोनों की विन विन सिचुएशन है। अगर आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की या बिजनेस की, तो विन विन सिचुएशन है। दूसरा आपने मुद्दा उठाया रसा के साथ। रसा के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं और भारत के अंदर ये क्षमता है कि आप जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आप अमेरिका से बात कर सकते हैं, आप रसा से बात कर सकते हैं। दोनों को बैलेंस करके हमें कैसे चलना है, जहाँ पर हमारे एक सम्मानजनक विन विन सिचुएशन वाले जो संबंध हैं, किस प्रकार से लेके चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे मोदी जी की मार्गदर्शन में जो इस समय हमारे कंट्री ने प्रोग्रेस की है, और जिस प्रकार से आप अगर यूक्रेन और रूस के वार की बात देखें, और पूरी दुनिया से भली भांति परिचित है कि हमारे रूस के साथ आज के संबंध क्या हैं, अमेरिका के साथ संबंध क्या हैं और किस प्रकार से हमें बैलेंस करके चलना है। तो वो शायद मोदी जी ने उस चीज़ को काफ़ी आगे तक लेके गए हैं और इसमें पूरी दुनिया उनके नेतृत्व का कायल है। आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, आप तो काफी युवा भी दिखाई देते हैं, यूथ का प्रोजेक्शन अमेरिका और इंडिया, क्या आपको लग रहा है ये हो रहा है लीडरशिप में? बिल्कुल हो रहा है। आज से पहले इंडिया अमेरिका की सुनता था, आज पोजीशन ये है कि एवरीबॉडी लिसन्स टू इंडिया बिकॉज ऑफ मोदी जी। ओके, एक सवाल है प्रमोद जी, मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा था, मुझे इसका जवाब आपसे पूछना है। आप तो एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्या हम चाइना का ऑल्टरनेट तैयार करने में कामयाब हो रहे हैं अमेरिका के सामने, अगर मोदी जी की बात कर रहे हैं, उसके दौरे की बात की जाए? बिल्कुल 100% सच है। और भारत के जो यंग यूथ का जो ब्रेन है, वो पूरी दुनिया उसकी दाद देती है। अरे अमेरिका के सारा पूरा टेक्नो टीम को भारत चलाती है और बिल्कुल उस चाइना से गियर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है और पूरी दुनिया को भारत पे एज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरा भरोसा है। चूँकि अभी जो आपका वैक्सीनेशन गेम हुआ था, उसमें भी भारत ने दुनिया के सारे गरीब राष्ट्रों की मदद की। भारत कभी भी किसी पे अटैक नहीं करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और सर्वे संतु सुखिना सर्वे बंतु, क्या सर्वे निरामया, तो इसी भाव से भारत काम करता है। हम तो अलग किसी को समझते नहीं है, इसलिए भारत के अंदर जो भी इंडस्ट्री आ रही है, उनको लगता है कि हमारा लैंड है, हमारा काम हो रहा है और पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है उससे। मैं इस ओपन टाउन हॉल में आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जरा तेजी से मुझे जवाब दीजिएगा। आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी का ये दौरा अमेरिका का एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, हाँ या ना, रिलेशंस में? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि योग का मतलब होता है यूनियन। हाँ, ओके, क्या मोदी जी का ये दौरा अमेरिका के साथ संबंधों में एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लाएगा? आएगा, जरूर आएगा। क्या मोदी जी का ये दौरा भारत के लिए विन विन सिचुएशन होगा, हाँ या ना? 100% हाँ। क्या मोदी जी का ये दौरा भारत के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा? हाँ हाँ हाँ। क्या मोदी जी का ये दौरा आने वाले समय में एक नया डिफेंस सेक्टर भारत के लिए ओपन करेगा, एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा? ओह या 100%, नो डाउट अबाउट इट। ओके, मोदी साहब, क्या ये दौरा मोदी जी का, इस दौरे के बाद आप एक टेक्टोनिक चेंज देखते हैं परसेप्शन में अमेरिका का भारत के प्रति? बहुत बड़ा चेंज आएगा और मैं ये भी कहूँगा कि भारत के अलावा अमेरिका को भी इसमें फायदा होगा। आप ये बताइए, क्या मोदी जी का ये दौरा 2024 में फर्क लाएगा? मोदी जी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या मोदी जी का ये दौरा आने वाले समय में एक भारत के लिए नया रोड मैप क्रिएट करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा, अवश्य करेगा। चाहे वो योगा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, एक नया सवेरा होगा।
और ये आप जान ही रहे मोदी जी को ये दूसरा मौका मिल रहा है यहाँ के जो संसद है उसमें बात करने के लिए। क्या 2024 में इस दौरे का फर्क कुछ देखने को मिलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल मिलेगा, हाँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, यानी पूरी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है मोदी जी को देखकर। टाइम स्क्वायर से कैमरामैन कपिल बेदी के साथ निशान चतुर्वेदी। थैंक यू। सॉरी कैमरामैन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। Coaching is now starting from grade 3, 4, 5, 6. कोटा जाने वाली बीच राह में आधे टेस्ट देके हैं सिलेक्शन की चाह में। ऑल इंडिया का बच्चा कोटा जाता है। This rat race is for rats, not for humans. So why should we even be a part of it? The Rat Race. This and more streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. BrahMos. Stealthy, lethal, precise. It flies at 3 times